Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So last night I was giving instruction on the meditation, mindfulness of breathing, and as the Buddha, they called it anapanasati, which is just mindfulness of the in-breath and the out-breath. Pretty simple. But of course it has huge as well as a catalyst for insight and liberating insight. And so much of it is, as in all meditations, and I think this is important to recognize, and from a Buddhist perspective, or from the Buddha's way of approaching things, the particular, I mean, there are certain methods or techniques or ways of applying the mind, mindfulness of breathing, loving kindness, contemplation of death, and I mean there's a huge number. But all of them need, we need to learn how to apply our attention properly with those methods or techniques. And one of the fundamental concepts of in Buddhist practice that the Buddha points to is a quality called yoniso manasikara, wise attention, considered reflection. It has many nuances of explanation or definition. Manasikara is like a directing of attention, and sometimes it might require thought. Sometimes it might require just a stilling of the mind and just being alert and attentive. But it's that applying of attention, and in particular, the yoniso manasikara, so to the root or to the source of things, being able to bring attention back to the source, back to the root. They're not getting caught up in proliferations or conjectures or getting stuck in just a holding, like a tightening of one's grip on an object, because that is missing the point also. So this balance of considered attention, wise reflection. The Buddha calls it the harbinger of the harbinger or sign of the arising of the Noble Eightfold Path. And the Buddha gives an image in the same way. In the early morning, when one sees the light begin to change, the dawn coming, then it's like the harbinger of a new day. It's a sign of the new day coming. And so in the same way, when we are learning how to
direct attention and have that considered reflection, it's a harbinger or sign of the arising of the Noble Eightfold Path. And when coming together of the path factors and being able to experience a cessation of dukkha, freedom from suffering. बनते जी हमको याद दिला रहे हैं कि कल रात हमने सांस के ऊपर ध्यान करने की बात, आनापानसति की बात की थी। बेसिकली वहाँ पे सांस के आवागमन पे ध्यान करते हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, लेकिन इस सिंपल क्रिया का बहुत भारी इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत उसके अर्थ हैं, बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस भी हैं कि मुख्यतः दो तरह से, कि एक तो मन को शांत करना और दूसरा कि वो हमारे लिए इंसाइट के लिए, एक अंतर्दृष्टि के लिए, जिससे कि हम मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए एक कैटलिस्ट की तरह बनना। जैसे सभी ध्यान विधियों में होता है, भगवान बुद्ध ने कहा कि आप चाहे कोई भी तरीका अपनाई कर लें, और उन्होंने ध्यान मन को संयमित करने के कई तरीके बताए, आनापान का, मैत्री भावना का, मरणानुसति का। उन सब में जो एक मुख्य बात यह है कि हमको सीखना होता है कि ध्यान को किस तरह लगाएं, अपना अटेंशन को कैसे ठीक से लगाएं। और उसमें महत्वपूर्ण जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं भगवान, योनिसो मनसिकारा, मतलब अब एक समझदारी से ध्यान लगाना, ध्यान देना। और कई बार उसको ये भी समझ सकते, उसमें कभी विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी सिर्फ मन को शांत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुख्य उसमें जो शब्द है योनिसो, उसका मतलब है योनि की ओर ध्यान, मतलब रूट की ओर ध्यान, जहाँ से उत्पत्ति होती है उसकी ओर ध्यान देना। और अपने जो भी उसके साथ प्रपंच जुड़ा है उसमें अटकना नहीं है, प्रपंच को देखें और उसमें अटके नहीं। ये जो साफ भाव रहता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़ लें और उसको बहुत टाइटली अपना अटेंशन करें, वो दैट इज व्हाट इज ब्यूटिफुली पुट इट एज मिसिंग द पॉइंट। मतलब आप समझ नहीं रहे क्या करना है। हमको ध्यान ठीक से रखना है और वाइज रिफ्लेक्शन करना है, हमको विवेचना करनी है, मीमांसा करनी है, ताकि उससे हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वो सामने प्रकट हो सके। भगवान ने उसके लिए एक बहुत सुंदर इमेज दी है कि जैसे सुबह सुबह उषा काल में सूर्योदय के समय पे धीरे धीरे लाइट बढ़ती है, तो भगवान ने कहा उसी तरह से जैसे कि हम सीखते हैं कि किस तरह से हमारा ध्यान योनिसो मनसिकार हो, तो हमारे लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है प्रकट होने लगता है। और सारे जो अष्टांगिक मार्ग के बेसिक फीचर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, पाथ फैक्टर्स, और हमको वो दुख निरोध की ओर ले जाते हैं। We establish attention on the breath, on the experience of the in-breath and the out-breath. That sense of attending skillfully, or skillful attention on the both the sensation of the breath as well as the experience of the mind. How do we respond to it? How are we reacting to it? How are we approaching it? So and that's why I say, like the Buddha's discourse Anapanasati is concerned with both the experience of the body, of feeling, of mind, of phenomena of mind, of dhammas, of mind objects. So that it's that with that wise attention and being grounded in the breath, then you're also attending closely to, well, what are the with each in-breath and each out-breath, along with the sensation of the body, what are the particular movements
mind or the responses of the mind, the mood of the mind, and the characteristics of the experience itself. And holding that with each in-breath and each out-breath. It gives a doorway into a settling, and it gives a doorway into a relinquishing of attachment, a relinquishing of clinging. जैसे हमारा अपना ध्यान सांस पे ठीक से लगाते हैं, सांस के अंदर आने में, सांस के बाहर जाने की ओर हमारा अनुभव निरंतर रहता है, तो हम समझदारी से ध्यान उसकी ओर देते हैं। तो सांस के आने जाने के साथ साथ और मन में क्या हो रहा है, मन में क्या अनुभव आ रहे हैं, वो भी जानते हैं। और भगवान ने जो आनापानसति का प्रवचन दिया है, उसमें सारी बातें समाहित हैं कि शरीर को, काया को कैसे अनुभव सांस का आना जाना और उसके ऊपर उचित तरह से, ठीक तरह से ध्यान देना। और हर सांस के साथ, सांस अंदर आ रहा है, सांस जा रहा है, मन में क्या हो रहा है उसको भी जान रहे हैं, मन के कैसे मूड हैं, और इस तरह से एक्सपीरियंस को हम हल्के से रखते हैं अपने पास, उससे चिपकाव नहीं करते। और हर सांस के अंदर जाने में भी सब जानकारी है और हर सांस के बाहर आने में भी जानकारी है। और इस तरह से जो हमारा मन है वो सेटल होने लगता है, शांत होने लगता है, और जो हमारी क्लिंगिंग है, अटैचमेंट है अनुभवों के साथ, किसी भी अनुभव के साथ, वो कम होने लगती है। So the directing of attention to mindfulness of breathing, mindfulness of the in-breath and the out-breath, this quality of yoniso manasikara is, it has a certain framework, and the Buddha is quite, he actually gives many different, say, frameworks or objects, ways of applying it, but they say the main one that he is using the Four Noble Truths. And what is wise attention, what is unwise attention? And unwise attention is when it's about me, my breath, my feelings, my mind. What was my mind like in the past? What will it be like in the future? What is it even like now? Good grief. And then you get tangled up into the analysis and the conjecture and the proliferations about self, making an identity or an identification, a sense of me entangled with the experience. And all you're doing is breathing in and breathing out, but we make it into an incredible problem. So to that sense of framing our experience in a different light, and that's the function of mindfulness. Mindfulness of breathing, yoniso manasikara, so framing it in a way that we're able to step beyond that. There's a wonderful phrase in the ahankara mamankara mananusaya. There's the I-making, the mind-making, the underlying tendencies to conceit, in the sense of conceit, not in the sense of puffing oneself up, conceit in the sense of creating an identity of any sort, whether it's sort of inferior, superior, equal comparison. So that stepping back from using that wise attention, considered reflection, so that the experience of the in-breath and the out-breath
is this is dukkha. Because if we start creating a problem with the breath, and that's just the member Luang Por Sumedho years ago saying, having a discussion with an English person, and when he was early days of teaching in England, and coming and sort of saying, I can't do mindfulness of breathing, and I can't get it. I don't know how to do it. And I just say, oh well, let's see, what can't you get? I can't. It just seems so impossible to do. Can you? Let's just sit here for a minute. Can you breathe in? I said, okay, yes. Okay, now can you breathe out? So, okay, you've got it. So, but as soon as that sense of self and I and me and mine and the I, that once that starts going, it gets extraordinarily complicated, and of course that is dukkha. And just to be able to, this is dukkha, and that's seeing how that works. So that considered reflection allows one to shed and you think, God, there's got to be more to this than that, and there is, but you have to be able to peel back those habits of attachment and proliferation, and be able learn how to, like contentment, learning how to be content with an in-breath and an out-breath. That wanting mind, the conceiving mind, is always coming up with something else that I should be doing, I should be getting. So just to be able to be present with the in-breath and the out-breath, so that contentment. And it doesn't mean you dumbly sit with just, okay, you've got India, Delhi, you probably don't see them much, but I just think of like Ajahn Chah, you see, you're not meditating like a water buffalo, you're applying some investigation and alertness, and it's not dumbly sitting there, okay, waiting for something to happen. It's, you engage with it, but then also being content with because that's so much of our we're pulled into that craving and attachment, and it's so much integral to how our experience of ourself and the world around us is conditioned by that. And that's why mindfulness of breathing, just learning how to pay attention to one in-breath and one out-breath, then it highlights more clearly what those habits of mind are and what we have to relinquish. It's sort of like having I guess even some obviously a dated image, but like a chalkboard or a whiteboard, and if it's nicely cleaned and then you write on it and you can see exactly what's written on it. But if you keep writing over it and writing over it and writing over it and writing over it, then it's hard to figure out what the heck is there. But and that's what our mind is like. You keep piling on the thoughts, the impressions, the proliferations, the worries, the fears, and just to come back to one in-breath, one out-breath, and you start to see more clearly what that movement is, and then you can get a sense of, that's where I can
relinquish. That's where I can let go, or that's where I can put some effort. भगवान ने जो हमको सांस के आवागमन की ओर ध्यान देने की इस बात सिखाई है, योनिसिको मनसिकारा की, उसके लिए कई सारे फ्रेमवर्क दिए हैं, कई सारे तरीके दिए हैं उसके लिए, और उनमें से जो एक महत्वपूर्ण है 4 आर्य सत्यों का फ्रेमवर्क है कि हम ध्यान देते समय क्या इस भाव से ध्यान कर रहे हैं कि ये मैं ध्यान देख रहा हूँ, ये मेरा सांस है, ये मेरा मन है जो इधर हो रहा है, इधर जा रहा है। और अगर इस तरह से हम ध्यान करेंगे तो नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के प्रपंच पैदा होते रहते हैं, और ये जो मैं का भाव है, जो आइडेंटिटी हम बनाते हैं, उससे अटक जाते हैं उसमें, और उसके कारण दुख का अनुभव होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं साधना करने में कि मेरा ध्यान ठीक नहीं हो रहा, मेरा मन इधर भाग रहा है। जो सांस के आवागमन का काम है, योनिसिको मनसिकारा का काम है, उसके कुछ शब्द भंते जी ने बताया जो बहुत याद करने योग्य हैं। अहंकार, ममकार, अस्मिमाना। अहंकार मतलब मैं का, कारा मतलब करना, क्रिएट करना, मैं का भाव क्रिएट करना, मेरे का भाव क्रिएट करना, और अस्मिमाना मतलब कंसीट, एक आइडेंटिटी बना के रखना। तो इस बात का आइडेंटिटी का मतलब कि मैं इसके बराबर हूँ, इससे अच्छा इन्फीरियर हूँ, सुपीरियर हूँ, या इन जैसा ही हूँ, किसी भी तरह की आइडेंटिटी बनाएंगे तो उसको साधना में दिक्कत आती है, दुख का अनुभव बढ़ता ही रहता है। तो ये सारी आइडेंटिटी से किस तरह से हम हट पाएँ, तो केवल एक सांस आ रहा है और जा रहा है उसको देखें, और जब भी ऐसी आइडेंटिटी बने तो उसको 4 आर्य सत्यों के विवेचना में देखें, उसको जांचें उस तरह से। आपने फिर एक उदाहरण दिया कि जब लुंग पोर सुमेधो शुरू में वहाँ इंग्लैंड में सिखा रहे थे ध्यान करना, तो एक साधक आया था कि मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता, मेरा तो मन बिल्कुल नहीं टिकता, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग तो आनापानसति तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने उससे कहा, अच्छा तुम बैठ जाओ, और क्या तुम सांस अंदर जा सकता है, तुम्हारा मालूम पड़ता है सांस जा रहा है? कहा एक सांस तो जा ही रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, अच्छा बाहर निकालो सांस, मालूम पड़ता है? कहता हाँ निकलता है। तो उन्होंने कहा बस यही तो करना है, और क्या करना है। तो दिक्कत यही होती है कि जब हम उसमें मैं का भाव जोड़ देते हैं तो जो आर्य सत्यों के अनुरूप ही उसमें दुख की भावना जागती है, क्योंकि उसके साथ हम प्रपंच खड़ा करते रहते हैं। तो हमको ख्याल रखना है कि एक कंसिडर्ड रिफ्लेक्शन, वेदना के साथ भी हैं, और उतना ही काफ़ी है। क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं कि सिर्फ एक सांस आ रहा है इसको जानो, एक सांस जा रहा है, तो साधक सोचने लगता है बस इतना ही करना है क्या, और भी तो कुछ करना होगा। तो फिर वांटिंग माइंड की क्रिएशन हो जाती है, कुछ इच्छा, कुछ चाह, मन टिकाए रहना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो भंते जी ने कहा कि जो साधना है वो एक ऐसा नहीं है जैसे एक भैंस होती है पानी में बैठी हुई है और कुछ नहीं उसको होश है, बस बैठी हुई है, उसी पे टिका हुआ है पानी में। अजान चाह जैसे उदाहरण देते थे इस बात का, वो कहते थे कि जो साधना है उसमें रिफ्लेक्शन साथ बहुत आवश्यक है। जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रति सजग रहना, और जो अनुभव हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करना सुचारू रूप से, उपयुक्त रूप से, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही मन क्रेविंग में जा रहा है, अगर हम उस पर रिफ्लेक्शन नहीं रखेंगे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मन में कुछ भाव जाग रहा है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो तभी हम इसको अपने जीवन में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि हम, बड़ी सहज सी बात है कि हम एक सांस आ रहा है उसको जान रहे हैं, एक सांस जा रहा है उसको जान रहे हैं उसका, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ के नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने आपने उदाहरण दिया जैसे कि एक वाइट बोर्ड जो स्कूलों में क्लासरूम में यूज़ होता है, अगर वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और उस पर लिखा जाए तो ठीक से पढ़ा जा सकता है। और अगर वो पहले उस पर लिखा जाए, फिर और लिखा जाए, फिर और लिखा जाए, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको जो क्या अब लिखा जा रहा है वो पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये दृष्टांत दे रहे हैं इस बात का कि जैसे ही कुछ चित्त में कुछ लिखा जाए, हम उसके प्रति सजग हो जाएं, तो उसमें और लिखा नहीं जाएगा, चित्त हमारा व्यथित नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा।
तो उपयुक्त विवेचना नहीं कर पाते तो फिर साधना ठीक से नहीं हो पाती। Through the sutta and got to the section on the mind and talked about the gladdening the mind. I breathe in, gladdening the mind, I breathe out. And is to remind people of that the Buddha's say very clear statement that the happy mind is easily concentrated. That and the next step in the sutta is samadhaham. You say the concentrating the mind. I breathe in, concentrating the mind. I breathe out. I have a problem with the word concentrating. just again, sometimes the words evoke feelings, and when we're told to if I'm told you need to concentrate your mind, I get tense. Get tightened up, so that sometimes it's translated as calming the mind. I breathe in, calming the mind. I breathe out. Settling the mind. I breathe in, settling the mind. I breathe out. It's just sometimes the early translators in the English, they say as a general rule, there was incredible service. But then some words have been sort of really sort of exclude everything else. Just got to concentrate and can't let anything else in, and that's kind of uncomfortable. It's a good. The word samadhi I've always appreciated how it's translated into the Thai language, because sometimes you say, like in Thai language, you just it's the same words. They just do it because it's about 30% Pali and Sanskrit in the Thai language, and much of it is just plunked in. But then the translation is of samadhi is establishing the mind firmly. That's a nice translation. That's a good description of what we were. So establishing the mind firmly, I breathe in. Establishing the mind firmly, I breathe out. That has a very different feel, and so it's important to explore these the ways that we relate and what the imagery or feelings that are evoked through the language, because we tend to make assumptions, and it's through that assuming certain, and it's like we assume self, like when the Buddha talks of attachment, you say like the different types of attachment, clinging, upadana, so that attachment to sensuality, sensual desire. Okay, it's attachment to sila bhatta paramata, the sila bhatta upatana. There's attachment to precept and practice. So I might say, purity, if I just do this, keep this rule, do it this way, then I'll become pure.
There's an attachment, sila upadana, so that, or attachment to views and opinions. And then oftentimes what people assume is say attachment to self. But that actually isn't what the Buddha says. And say it's attavad upadana. So attavad it's not atta upadana. It's attavad upadana. So it's an assumption of self. Because there isn't a self to begin with. Then we assume it into being, and then we attach to it, which is even more weird. If you're attached, like sensual desire, it's there. So, and then we attach to it. But sort of like that sense of self, it just isn't there. We assume it into being, and then we attach to it. That's just even more, just perverse. What the mind does to us. So to be able to see that more clearly, and then recognizing with just that sense of again coming back to experience, the in breath, the out breath, settling the mind, calming the mind. I breathe in, calming the mind. I breathe out, and then with that calm mind, then you can recognize the attachments, the ways that we're overlaying attachment to experience. लुंगपुर हमें याद दिला रहे हैं कि कल रात जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी पूरी कंप्लीट नहीं थी, तो कल चित्त का जो सेक्शन था उसमें चित्त को प्रसन्न करना, ग्लैडनिंग द माइंड की बात कही थी, और फिर उन्होंने याद दिलाया कि हमें कि एक प्रसन्न चित्त ही ठीक से कंसंट्रेशन हो सकती है, उसकी ठीक से समाधि हो सकती है। तो फिर बता रहे हैं भंते जी कि अगला स्टेप जो था समाधहम चित्तम, तो सांस को जानकारी लेते हुए सांस अंदर आ रहा है तो चित्त को समाधहम चित्तम, बाहर जा रहा है तो समाधम चित्तम। अब ये शब्द समाधम जो है समाधि से आया है, उसकी ट्रांसलेशन को लेके भंते जी ने डिटेल में बताया कि किस तरह से परेशानी होती है। कि जो बहुत पहले के ट्रांसलेटर्स थे जिन्होंने काम किया, और वो भंते जी कहते हैं उन्होंने बहुत सर्विस की है इस धर्म के क्षेत्र में, लेकिन कुछ शब्दों का ऐसा ट्रांसलेशन हो गया जिससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे समाधि का ट्रांसलेशन हो गया कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जब जैसे हो एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना, बाकी सब चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना। तो भंते जी बता रहे हैं कि शब्दों की अपनी एक फीलिंग आती है शब्दों के कारण। तो जब आप कहते हैं कि कंसंट्रेट करो, एक ही चीज़ पर मन रखो, इधर उधर मत जाओ, तो अपने अनुभव से बताते हैं कि उससे टेंशन हो जाता है। जबकि समाधम का एक दूसरे सेंस में ट्रांसलेशन किया जाए, चित्त को शांत करता है, चित्त को इकट्ठा करता है। तो जहाँ हम एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो हमारी सब स्पष्ट अनुभव में आता है कि अगर हम ऐसा किसी चीज़ पे ध्यान कर रहे हैं और कोई और चीज़ ना आए तो मन शांत नहीं रहता, क्योंकि हमेशा ये भय सा लगा रहता है कोई और चीज़ हमको डिस्टर्ब ना कर दे, हमारा ध्यान उधर ना चला जाए। तो आप बताते हैं कि समाधि शब्द का अर्थ इस सेंस में लेना ठीक नहीं है। तो आप बता रहे थे कई बार दूसरी भाषाओं में, जैसे थाई भाषा में वो कह रहे थे कि उसका ट्रांसलेशन समाधि का जो किया गया था वो ज़्यादा उपयुक्त उनको लगता है, कि वो एस्टैब्लिशिंग द माइंड फर्मली, मतलब मन को ठीक से लगाते हैं। जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं तो मन को उसमें ठीक से लगाते हैं, सांस बाहर जा रहा है तो मन को ठीक से लगाते हैं। कहते हैं इस तरह से जब हम शब्द का ट्रांसलेशन करते हैं तो एक अलग फीलिंग जागती है, एक अलग भावना जागती है कि, और ये हमें भाषा के जो इन्फ्लुएंस है उसके प्रति भी सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसलेशन के कारण भी हम कभी साधना में हमारी दिक्कत आ जाती है। तो फिर अगला एक जो बात उन्होंने आगे हमें बताई कि अटैचमेंट की, जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताया उपादान के बारे में, कि कई तरह के उपादान हमें भगवान ने बताए हैं कि कामनाओं के प्रति जो काम उपादान है कि हम इंद्रियों के सुख के प्रति अटैच हो जाते हैं। फिर शीलबद्ध उपादान है कि हम अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रिसेप्ट्स हैं, उनके प्रति अटैच हो जाते हैं कि मैं अगर ये रूल को इतना खींच के रखूँगा तो मेरा मन और श्योर हो जाएगा, तो
प्योरिटी का कॉन्सेप्ट उन रूल्स के साथ जोड़ देते हैं। फिर जो उपदान है वो दिट्ठी से, विचारों से, अपने ओपिनियन से, व्यूज से हो जाता बता रहे हैं हमें कि भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया अत्तवाद उपदान, कि हम सेल्फ के वाद जो है, अत्ता का जो वाद है उसके प्रति अटैचमेंट है। मतलब वियर्ड कि क्या कि कोई चीज़ है नहीं, पहले हम उसको अज्यूम करते हैं और फिर उसके प्रति अटैच हो जाते हैं। तो जो जब हम उसका ट्रांसलेशन इस शब्द का ये करते हैं, कामिंग द माइंड, मन को शांत करना, तो सांस आ रहा है और मन को शांत कर रहे हैं, सांस जा रहा है तो मन को शांत कर रहे हैं। और जब चित्त शांत हो जाता है तो उससे हमको जो उपदान है, जो अटैचमेंट है, वो उसको जानने में सहूलियत होती है, क्योंकि शांत चित्त से ही हम अपनी अटैचमेंट्स को जान सकते हैं। कहाँ हमारा चिपकाव है, कहाँ उपदान है, वो शांत चित्त में ही मालूम पड़ सकता है। So the last step in the section on the mind is freeing the mind or releasing the mind. I breathe in, freeing the mind, releasing the mind, I breathe out. And of course that is that freeing or releasing, say on an insight level, that releasing from attachment and clinging. On the samadhi level, sort of freeing or releasing from the hindrances, the nivarana, that the things that cloud the mind or obstruct the mind. So that it works on both levels, releasing and freeing, so that there is both an experience of calm, as well as of insight. But the main thing is that sense of being willing to release that and to free the mind from that which is obstructive. And again, that's where that attentiveness or wise attention, considered reflection, when one sees, it's like the Buddha says over and over and over again, I teach only two things: dukkha, cessation of dukkha, and to be able to see those areas where there is constriction or a feeling of discontent. The mind, I breathe in, releasing the mind, I breathe out. So it's something that we do on a moment-to-moment basis, on an in-breath and out-breath basis. It's not sort of some grand project. Sometime in the future, I will release my mind. It's a present moment practice. चित्त के सेक्शन में आखिरी स्टेप मंत्र जी बताते हैं आता है, हम चित्त को फ्री करते हैं, मुक्त करते हैं। तो बता रहे हैं कि उसके दो आयाम हैं, एक इनसाइट के आयाम पे, एक अंतर्दृष्टि के आयाम पे, और दूसरा समाधि के आयाम से। अगर इनसाइट के आयाम से समझते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपने चित्त को जो भी हमारी अटैचमेंट्स हैं, चिपकाव हैं, उपादान हैं, उनसे रिलीज़ करते हैं, उनसे अपने को हटाते हैं। और समाधि के लेवल पे अगर कहते हैं तो उसका मतलब है हम अपने चित्त को, जो निवरण हैं, जो 5 निवरण हमारे मन चित्त को भ्रमित कर देते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं, उनसे चित्त को हटा लेते हैं। तो दोनों ही स्तर पे रिलीजिंग और फ्रीइंग का जो बात है, जो चित्त को मुक्त करने की बात है, वो दोनों समाधि के लेवल पे भी और इनसाइट या विपश्यना के लेवल पे भी ऑपरेट करते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि हम चित्त को उन सब अटैचमेंट्स, उन सब चीज़ों से, उन सब मेंटल फैक्टर्स से रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे चित्त को ऑब्स्ट्रक्ट करें, जो चित्त को रोकते हैं फ्री होने में, मुक्त होने में। और हमें याद रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने बार बार ये कहा है कि मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें
सिखाता हूँ कि दुख है और दुख से मुक्ति है। तो हमारी साधना के दौरान भी हमको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या इस समय साधना करते हुए दुख हो रहा है, क्या मैं बेचैन हूँ, क्या मेरे को संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ वांटिंग, कुछ चाहता हूँ। तो जब हम इस बात का ध्यान करेंगे तो उनको रिलीज कर देंगे तो चित्त हमारा शांत हो जाएगा, चित्त में अंतर्दृष्टि हो जाएगी। और ये काम जो है मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस पे होता है, कोई ऐसा ग्रैंड प्रोजेक्ट नहीं है कि हाँ बहुत सालों बाद ध्यान करके मेरा चित्त मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मोमेंट टू मोमेंट, एक सांस आया चित्त को फ्री कर रहे हैं, एक सांस गया चित्त को फ्री कर रहे हैं, उस बात को हमें समझ के ध्यान करना चाहिए। So the last section in the Buddha's discourse on and instructions on mindfulness of breathing is the Dhammarama, about the contemplations of around Dhamma or phenomena or objects of reflection, objects of insight. So that the first one, and they're saying all of them is like anicca. So that contemplation of anicca, of impermanence. Vilaganupassana, contemplation of dispassion. Nirodhanupassana, contemplation of cessation. Patinissagganupassana. Patinissagga is relinquishment. Incorporate any of these in the early part. I mean, this is like learning the structure so that you can learn to apply it in different times when it's appropriate, when it's going to be helpful, when it's going to be useful. And particularly these aspects of contemplation for insight and relinquishment are even from the very first knowing that one is breathing in a long breath, knowing that one is breathing out a long breath, when it's informed by dispassion and relinquishment, it's a very different experience than the experience of trying to force the mind onto the breath and hold it there forever. It just isn't. It's a very different experience. So that understanding that whole structure and recognizing what it's for, that contemplation of anicca, of inconstancy, of uncertainty. I mean, it has different flavors. The word anicca is some impermanence, changing nature of things, the arising and ceasing of things, but also the sense of as Ajahn Chah would oftentimes use, not all the time, but oftentimes use, that sense of it's unsure, uncertain. It's a flavor of impermanence. And I think oftentimes what happens when just use, again with language, it's sort of we say impermanence, and then we end up watching impermanence and watching arising and ceasing, and it's an object out there. But it's important that it's how do we feel about it? How do we experience it? What's the heart feel with when there's something impermanent or that nature? And then it's seeing that unsure, uncertain nature of change, and that's how we feel, how we experience it. So that's an aspect of that directing of attention in different ways, so that there is an increased clarity and ability to relinquish and let go.
आनापान सती सूत्र के अंतिम सेक्शन जो है धम्मानुपश्न वाला है कि हम किस तरह से जो भी फिनोमिना हैं, जो भी चीज़ें वो धम्म हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी ओर कैसे ध्यान दें। ये तो विवेचना के ऑब्जेक्ट हैं इनसाइड डेवलपमेंट के। तो उसमें कई आयाम आते हैं, अनित्यानुपස්සना, विरागानुपස්සना, निरोधानुपස්සना, पटिनिस्सग्गानुपස්සना। तो अनित्य जब तो हम सब समझते हैं, अनित्य के भाव, विराग का मतलब एक राग रहित होना, निरोध मतलब अनुभव करना कि जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो समाप्त हो जाती है, और पटिनिस्सग्गा बताते हैं कि रिलिंक्विशमेंट की उसके प्रति चिपकाव को समाप्त करना। कई बार ऐसा लगता है कि ये अंतिम सत्र है इसका, आनापान सती का ये 12वां स्टेप है या 14वां स्टेप है, तो ये तो उसके पहले तो इसका कोई महत्व नहीं है, 12 स्टेप पूरे हो जाएंगे तब करेंगे। तो भंते जी याद दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को हम पहली स्टेज में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कि जैसे उदाहरण के लिए भंते जी ने बताया कि जब हम देख रहे हैं कि ब्रेथ इज लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब गहरा लंबा सांस है कि छोटा सांस है, वो भी अगर हम हमारे एक डिस्पैशन से इन्फॉर्म्ड हो, मतलब उसके प्रति हमारा चिपकाव ना हो और हम उसको अटैचमेंट ना हो उस परिस्थिति में भी कि हाँ लंबा है कि छोटा है, तो भी हमारी साधना और अच्छी तरह से हो सकती है। इसी तरह से एक और उदाहरण दृष्टांत दिया, जो अनिच्छा शब्द है उसको कई तरह से ट्रांसलेट किया जाता है कि बदल रहा है, और दूसरी बात ये यहाँ उत्पन्न होता, उदय होता है, व्यय होता है। लेकिन एक और उसका जो आयाम अजान चा कई बार बताते थे कि वो अनसर्टन है, वो श्योर नहीं है। तो मंत्री जी फिर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि लैंग्वेज का कितना भारी इम्पैक्ट होता है, कि ट्रांसलेशन से कितना इम्पैक्ट होता है। तो हम जब कोई चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए, तो जब हम कहते हैं अनित्य है तो हम उसको बाहर की ओर देखते हैं, ये चीज़ है और इसको हम जान रहे हैं कि उदय हो रही है, व्यय हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी अंदर की ओर ध्यान दें कि इस उदय होने को और व्यय होने को हम कैसा महसूस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो अनसर्टन है, वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, पक्का विश्वास नहीं है। तो इस कारण से वो भाव भी हमको अनुभव पे आता है। तो हमारा अटेंशन अगर हम ठीक से ध्यान देंगे तो देखेंगे कि उसके विभिन्न आयाम हमारे सामने आ जाएंगे। केवल एक सांस को जानने में, आने में और जाने में सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। So with mindfulness of breathing and directing our attention to the aspects of insight, that impermanence and dispassion, and the willingness to let the mind cool and settle. I mean, that's another way of translating viraga. It is fading away and letting things fade, and so much of say the problem of our mind is we don't let things fade away. We want to be stimulated. We want to we want to be. We want to experience, and on a certain level, it's just very natural. But when it's compulsively done, then there's this. We invest a certain passion, and of course, then we want to gain, to get, to be out of it, and then that just keeps this cycle of complication and frustration going. So that willingness to, because then when things are impermanent and uncertain and changing, the reality is that there is a fading away already, which we tend to disregard and then look for something else and just keep me going and so give me another hit of something. And so that sense of being willing to allow that there's like things to fade, and it's similar with the cessation. It's a letting
a thought, and that's sometimes one experiences a thought or a feeling, and to make it conscious in terms of, and this is where, especially with mindfulness of breathing, just learning because the breath is very neutral, and then to be attentive to a particular thought, and then watch it fade or watch it go to cessation, toward its ending, and again, what happens oftentimes is that compulsive nature of desire, then oh my God, it's ending. I got to have something else. I've got to prop it up somehow, and it's not so conscious, but that's when you're watching and attentive and alert to it, you start seeing, oh, that's what we keep doing. So that learning how to be again kind of gladdened and peaceful with that fading away and cessation. And sometimes say the word cessation, oftentimes it's like annihilation, which is not. It's not the same type. I mean, it's actually a hard, because there is a cessation and ending. But that nirodha, like dukkha nirodha, or even say like in the teachings that the Buddha gives on dependent origination, so that say with the cessation of ignorance, there's a cessation of consciousness, and you think, oh, it's just sort of this. With annihilation of ignorance, and there's the annihilation of consciousness. Well, it's not really the feeling. It's more like, as it ceases, what is there, and what is that? Is this quality of knowing, of clear knowledge, of understanding, and we can be. That can be there. We don't have to prop it up. We don't have to force it to be there, but that's the nature of the mind. And then as things, that sense of cessation is also, there's other ways of translate, alternative ways of expressing that. So like when, so they say as desire, because often they say with the cessation of desire, there's a cessation of clinging. And so, as through the dependent origination teachings, and cessation of when a problem, and me and my desires, so I can get rid of them, and I don't have to bother with them again. But then that sets up a cycle of more desire, more clinging, more attachment to identity. But then it's sort of, when it's no longer a problem, I don't make a problem of this, then it doesn't sort of carry on. And it's again, language is it's helpful to learn to play with language. And this is also where this yoniso manasikara, that's wise attention. And when we bring up, ceasing, cessation as a word, and we think, that conditions the mind in a particular way, and we can, but it can also open doorways to a sense of space. Ceasing, and then it's a new possibility. There's all sorts of possibilities of spaciousness and awareness. So it's just learning how to, again, with each in-breath and each out-breath,
you're learning how to work with the mind, and learning how to work with how. Again, just not getting too distracted. Dukkha, cessation of dukkha. Okay. Don't forget. Don't forget the direction. And I think that's also where the sense of relinquishment is so important. And I'll just wrap it up for today. The sense of relinquishment and letting go. It's releasing that sense of self, sense of me, and of the various views, opinions, proliferations that arise from that. That mindfulness of breathing is a doorway into and the tool for experiencing both the calm of the mind as well as the liberating insight of freedom from dukkha. आगे जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि धम्मन कृष्णा की चर्चा हो रही थी, उसमें आगे बता रहे हैं कि हमारे जो ये सत्र है ये इनसाइट डेवलपमेंट की और उसका ध्यान है। और जो शब्द हमने इस्तेमाल किए थे, जैसे विराग शब्द था, उसका ट्रांसलेशन किया था, एक और जो अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन किया जाता है फेडिंग अवे, मतलब वो अपने आप अस्त हो रहा है, अपने आप समाप्त हो रहा है, चीज़ फेड हो रही है। और उसको हम उत्पन्न हो रही हो फेड हो जाएगी, वो अस्त हो जाएगी, उदय हो रही है तो व्यय हो जाएगी। और अगर हम उसको एक प्रॉब्लम बना देते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो अनुभव होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सांस आ रहा है जा रहा है, वो रुकता भी है, बीच में रुक जाता है, तो फिर हमारा मन रहता है अब किसको पकड़ के रखें, क्योंकि सांस भी तो रुक गया है। तो ये जो हमारी टेंडेंसी रहती है चीज़ों को किसी न किसी आलम्बन को पकड़ के रखने की, वो हमारे लिए साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशन शुरू करता है। और हम ये जानते हुए भी कि चीज़ें अनित्य हैं, फिर भी चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ तो बना रहे। तो वो जो भाव रहता है कि हम जानते हुए भी उसको मानते नहीं हैं, उसके अनुसार साधना नहीं करते, तो फिर मन में बेचैनी होती रहती है कि ये सांस रुक गया तो क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए मन के लिए आलम्बन। तो अगर हम इस बात को हृदयंगम कर लें कि जो अनित्य है, वो अनसर्टन है, वो बदलेगा ही, वो जाएगा ही, तो जो मन के अंदर ये तनाव सा पैदा हो जाता है वो कम हो जाएगा। और ये इसी तरह का दृष्टांत बंदे जी ने सेसेशन के ऊपर लेके दिया कि फेडिंग अवे सेसेशन। कई बार हम सेसेशन को अनहाइलेशन की तरह समझते हैं कि इसको मुझे ख़त्म करना है, तो उस कारण से भी एक अलग उसका तात्पर्य हो जाता है कि चीज़ें अपने आप समाप्त हो रही हैं प्रकृति के नियमों के हिसाब से, और दूसरा कि मुझे उनको समाप्त करना है। तो ये एक साधना में दिक्कत खड़ा करता है, हमारे लिए अंतर्दृष्टि बनाने में दिक्कत खड़ी करता है। जो सांस है वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, और इसको देखना और फिर इसके सेसेशन को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही भाव रहता है कि कहीं ना कहीं तो ध्यान देना चाहिए। उसी बात को उन्होंने और पुनरावृत्ति की, उस बात को समझाने के लिए। तो इसी तरह से जो शब्द निरोध है, जिसका सेसेशन ट्रांसलेशन किया जाता है, या दुख निरोध की बात की जाती है, या प्रतित्य समुत्पाद में कहा जाता है अविद्या के निरोध की बात की जाती है, संखार निरोध की बात, विज्ञान निरोध की बात, तो उसको भी अगर हम एनाइलेशन की सेंस में ले लेंगे तो देखेंगे बड़ा अजीब सा लगता है कि अविद्या का एनाइलेट कर दो तो संस्कार एनाइलेट हो जाएंगे, संस्कार एनाइलेट हो जाएंगे तो विज्ञान एनाइलेट हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट द सेंस इन विच द बुद्धा वांटेड। भगवान ऐसा उसका तात्पर्य नहीं था कि उसको समाप्त करना है।
तो उसके उन्होंने अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन बताया, जैसे कि जो हम जब उसमें प्रतीच्य समुत्पाद में कहते हैं कि तृष्णा के निरोध से उपादान निरोध होता है, और उसमें निरोध को अगर हम उस सेंस में ले लें कि उसको समाप्त करना है, और एक और उसका तात्पर्य लें कि वी डोंट मेक इट इनटू ए प्रॉब्लम, कि जो निरोध है उसको उस सेंस में समझने की कोशिश करें। तो जो हम कहते हैं सेसेशन ऑफ डिज़ायर, वो कहते हैं डिज़ायर इज़ नो लॉन्गर ए प्रॉब्लम, कि जो हमारी तृष्णा जाग रही है हम उसको एक परेशानी के रूप में ना देखें कि मुझे तृष्णा जाग रही है, क्योंकि दिक्कत यही होती है उसमें मैं और मेरे का भाव रहता है, ये मेरी तृष्णा है, ये मेरी तृष्णा जाग रही है, ये नहीं जागनी चाहिए। तो जो अटैचमेंट है, उपादान है, वो हम परेशानी करता है। तो उसी से उदाहरण दे रहे थे कि अगर हम एक अल्टरनेटिव समझ लें उसकी सेसेशन की, उसको एनाइलेशन की सेंस में भी ना लें, लेकिन ये लेंगे हाँ, जो जब जैसे हम कहते हैं कि तन्हा निरोध, उसको हम समझे कि तन्हा जो है हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रही, ठीक है, जाग रही है, देख लिया, तो उसका एक तात्पर्य ही अलग हो जाता है, वो चित्त को शांत करने में मदद करता है। तो बता रहे थे कि जो योनिसो मनसिकार है वो इस सेंस में भी हमको देखना चाहिए कि उसकी सेसेशन शब्द की जैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि हर सांस के साथ सांस आ रहा है, रुक रहा है, तो सेसेशन हो गया, सांस जा रहा है, बाहर आ रहा है, रुक रहा, तो सेसेशन हो गया। तो किस तरह से हम योनिसो मनसिकार की मदद से किस तरह से मन के साथ काम करना है वो ठीक से समझें, और अंततः हमारा मुख्य जो हमारी डायरेक्शन है साधना की, वो ठीक रहनी चाहिए कि दुख है और दुख का निरोध होना चाहिए, दुख का समाप्ति होनी चाहिए। और उस सेंस में भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि जो भी अनुभव हो रहा है उसको हमको यू टू रिलिंक्विश इट, उसको प्रति चिपकाव नहीं रखना है। जो बार बार बनते जी बताते हैं, भगवान बताते हैं टू लेट गो, वो बात हमारे हमेशा सामने रहनी चाहिए। और वो लेट गो हर चीज़ के लिए है, जो हमारे ओपिनियन हो, हमारे विचार हो, हमारी मन की स्थिति हो, हर एहसास हो, आ रहा है तो जाएगा भी और जा रहा है तो रुकेगा भी। तो अगर हम ये कुछ फ्रेज इस तरह से ठीक से याद रख लें, तो जो आनापान है, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग है, वो दोनों ही काम करता है कि हमारा चित्त को शांत करता है और इंसाइट के लिए भी काम में आ सकता है कि जो अंतर्दृष्टि है, जो हमारी प्रज्ञा है, वो पुष्ट हो सकती है। So before we request Bhante for permitting questions, I think we should all fold our hands and acknowledge the teaching and thank Bhante. Dhamma kathaya sadhu param namase, sadhu 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 anumodam. Thank you. Can we have any questions, with your permission? Yes, if there are any questions. Questions, अगर हो पूछ सकते। My question is, when you talk about anapan, breathing in and breathing out and looking at the mind and the feelings, is it through sensations, or how do we look at it? And can we look at it with you for 5 minutes? How actually do we look at the feelings and the I mean, one is the word. I mean, because also again, thinking of language. As soon as you say, "How do I look at it?" you've already managed to distance yourself from it. Sort of, it's an object out there that I'm going to look at, and so
it's important to sort of recognize what the habit of the mind is. And that's why the Buddha uses, it comes up in say experience of the body, experience of feeling, experience of the mind itself. The verb that the Buddha uses, the pati sangveti. So experiencing the mind, sensitive to the body, sensitive to the, so it's sort of like being inhabiting the experience, and that's what mindfulness is a key for helping to what's the experience of pleasure or discomfort? What's the actual feeling of the mind? What's the mood of the mind? Is it spacious? Is it contracted? And so that inhabiting the experience and recognizing it, so that when we can start to see, are we adding dukkha to it, or are we not? Is there is dukkha is it not a problem? So that's the and with mindfulness, then one is able to say recognize more clearly without that projection of what one thinks what should be, one is fearing that it might be, and sort of all the added layers of experience that we tend to do. So it's like coming back to that simple experience, simple sensation, and then just recognizing it. So it's a point of investigation, or a point of contemplation. How are you investigating the mood when you merely observing it go in and go out? Yeah. So how are you investigating the mood? How are you supposed to investigate? Yeah, see, the thing is again, language is sometimes a bit difficult to as that like the word I introduced at the very beginning, yoniso manasikara, as like wise attention, considered reflection. And so as soon as we say reflection or investigation, we tend to assume that we're thinking about it. And then attending closely to what the experience is, and or as I say, that patisangveti, experiencing, inhabiting the experience. Is it making sense? Yeah, not very clear. And how does that, with the breath, when you said there is dukkha and letting go of the cessation of dukkha, so in one breath you're even supposed to observe it, you're supposed to investigate it, and also look at Yes. For one single breath. Yes, yes. Well, the thing is that so you're not going to get tested on this. You don't have to complete the experience. And so the anchor that the Buddha points to is something that's very close to us. We're always breathing. It's sort of like, I remember one time Ajahn Chah
talking to a lay person and was, and there's I don't have enough time to meditate or practice or keep all these precepts and learn all these teachings, and I don't have enough time for all of that. And Ajahn Chah, do you have time to breathe? And of course we always have time to breathe. So the breath is so it's that using, that coming back to that very basic human experience of we breathe in, we breathe out, and using that as a vehicle for gathering attention. And from that point, then we can start to notice and recollect and you've got to do it all in one in-breath. But it's you've got an anchor as a point of investigation, or a point of recognition of what those patterns are. आपने प्रश्न पूछा कि आनापान में जब कह रहे हैं कि सांस आ रहा है जा रहा है उसको जानकारी करनी है, और फिर मन की स्थिति क्या है, वेदना क्या है, तो क्या ये सब मन की स्थिति वगैरह सब शरीर की संवेदना से देखनी है? तो बंते जी ने जवाब दिया कि ये लैंग्वेज का एक जो भाषा का जो इम्पैक्ट होता है वो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप कहते हैं कि मैं कैसे देखूं इसको, तो जो आप चीज़ देख रही हैं उसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया और आप अलग हो गए, तो उसमें एक हियाटस पहले ही क्रिएट हो गया, गैप पहले ही कितना हो गया, मैं और मेरे का भाव अलग पहले ही आ गया। भगवान जब हमें कहते हैं शरीर के बारे में, वेदना के बारे में, मन के बारे में या धम्म के बारे में, तो शब्द इस्तेमाल करते हैं पटिसंवेदी, मतलब जो अनुभव हो रहा है उसके प्रति सेंसिटिव है, अनुभव के प्रति सेंसिटिव है। क्या मैं अनुभव को पूरी तरह से देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, क्या मेरा अनुभव है, वो सुख का है कि दुख का है, मन का मूड क्या है, वो मन जो है वो बहुत संकुचित हो गया है या बिल्कुल ब्राइट है, फैला हुआ है। तो मैं ध्यान कर रहा हूँ या ध्यान कर रही हूँ, तो देखते हैं क्लियरली कि क्या मेरे मन में ये भाव है कि ध्यान ऐसे होना चाहिए या कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये सब जो मन में विचार चलते रहते हैं, उथल पुथल चलती रहती हैं, उस सब को अनुभव करना है, उन सबको पहचानना है, उन सबको जानना है। तो जो प्रश्न पूछा जाता है कि बाद में कि कैसे हम मूड को इन्वेस्टिगेट करें, कि बेसिक आइडिया जो भगवान ने दिया है, बेसिक जो मूल मंत्र है यूनिसो मनसिकारा, कि हम प्रॉपरली अटेंड करें, समझदारी से अटेंड करें, समझदारी से उसके बारे में विवेचना करें, उसकी मीमांसा करें। कि और ऐसा नहीं है कि इसमें थिंकिंग करना है, लेकिन थिंकिंग बंद करना भी नहीं है। अगर थिंकिंग हमारे सोचना अगर हमारे को अटेंशन को डायरेक्ट करने में हेल्पफुल है तो वो भी उचित है। और लेकिन बेसिकली जो भी अनुभव हो रहा है उसके अंदर पूरी तरह से उसको अनुभव करना है। बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया बंते जी ने, पटिसंवेदी, विच इज इनहेबिटिंग द एक्सपीरियंस, तो उस अनुभव को पूरी तरह से जो भी हो रहा है मन में या शरीर में या चित्त में, उसको ठीक तरह से अनुभव कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि क्या इससे इस उत्तर से मदद मिली, तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत। तो फिर बंते जी ने फिर कहा कि उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि सांस भी देखिए, फिर फीलिंग भी देखिए, फिर दुख भी देखिए, तो ये सब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे हो जाएंगी? तो आपने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक पूरा सारी चीज़ों का एक कोर्स पूरा करना है, ये एक एंकर की तरह यूज़ करना है, ब्रेथ को एक एंकर की तरह यूज़ करना है कि हमारा मन उस पर टिका रहे। लेकिन जब जो चित्त की स्थिति को देख रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, लेकिन एक एंकर भी हमारा है कि मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो कई बार लोग लगता है कि ये सब इतने सारे काम करने के लिए तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया आजान चा का कि एक गृहस्थ आए थे उनके पास, कहने लगे मेरा बहुत समय नहीं है,
कि साधना करने का और शील के बारे में सोचने का, चिंतन करने का, तो उन्होंने उनसे यही कहा कि तुम्हारे पास सांस लेने का समय है? उस अष्टक उन्होंने उत्तर दिया होगा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि बस वही सांस आ रहा है जा रहा है उसकी जानकारी करना ही सफिशिएंट है। वही है एक हम एक व्हीकल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारा अनुभव हो रहा है उसको हम और कॉम्प्लिकेट ना करें। जो हो रहा है उसको जान रहे हैं, सांस आ रहा है और जो हो रहा है उसको जान रहे हैं, तो उससे हमारा चित्त धीरे धीरे शांति भी हो जाता है और फ्री भी हो जाता है। Maybe one more question, we'll have a break. एक और कोई प्रश्न हो? My question is, when you are observing the breath, a certain memory or a thought arises in the mind, when the mind is quite calm, and you don't realize that, I think you've gone into the dream world and you've fallen asleep, and there is the feeling that you're not sleeping also, and you can feel the breath, you can feel the body, you can feel the sensations, as well as you can observe the thought and the mind. But then after a little while you realize, no, I'm actually sleeping. Now, how do you tackle a situation like that? And no, that's great, because it's we especially after we've been meditating for a while, years, and we get really good at drifting off. This is what happens. So that's, but that's also where for me, and different people will approach it differently. But I find the body such a helpful anchor because it's tangible. Because the mind, on a certain level, we can convince ourselves of just about anything. So it's like Ajahn Chah sort of said, he said, one of the fastest ways to enlightenment is to look directly at the mind and say, liar. Because it's just coming up with these stories all the time and tricking us, fooling us. So I've always found, in my own experience, I've always found that the body, the kind of posture of the body, the kind of feeling of ease or constriction in the body, the energy of the body, a very good anchor or reminder or mirror of supporting clarity and a clear mind. So to me it's a good readout of what my mind is doing. If my body's starting to slump or starting to, then you realize, oh, my mind is, it's wandered off, it's drifted off. So I've tended to use that mindfulness feeling a balance. Is it balance as I breathe in, breathe out? Is there a kind of a bright energy there, or is it a kind of a dull energy? So that's I've and as I said, different people will use different things, but that's certainly what I've tended to rely on, is because it's I'm a very literal person. And so that says, okay, back to the body. And so I find it it's anchoring, it's settling, as well as there's this plugging into that feeling of, okay, I can release this and relinquish it, and then move into a spacious quality of mind as well.
Okay, that's how, oh, the translation. आपने प्रश्न किया कि सांस को देखते देखते कई बार पुरानी कोई याद आ जाती है, कोई विचार आता है, तो एक तरह से उसी में लोट परोट लगाते हैं, एक तरह के ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं और कुछ देर बाद पता चलता है कि मैं तो सो ही रहा था। तो ऐसी स्थिति को कैसे हम हैंडल करें? तो बंते जी ने जवाब दिया कि जब हम कई वर्ष तक ध्यान करते हैं तो इस तरह से मन जो ड्रिफ्टिंग में काफ़ी सुलभ हो जाती है हमारे लिए कि मन ड्रिफ्ट हो जाए, इधर उधर चला जाए और विचारों में खो जाए। तो इसको हैंडल करने के लिए कई लोग अलग अलग अप्रोचेस हैं। तो बंते जी बता रहे हैं कि मेरी जो तरीका है कि जो शरीर है, काया है, उसको एक बहुत अच्छा एंकर है, एक अच्छे एंकर के रूप में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि विचारों के बारे में तो कोई अंत नहीं है। अजान चाह बताते थे कि अगर सबसे तेज़ जो शीघ्र मुक्ति का रास्ता है उसमें ये कहो कि चित्त को देखो और उसको कहो कि तुम झूठे हो, क्योंकि चित्त जो है हमको भ्रमित बहुत करता है। बंते जी बता रहे थे कि मेरे लिए जो है इस ऐसी परिस्थितियों में जब मन बहुत इधर उधर ड्राउजीनेस की तरफ या ड्रिफ्टिंग हो रहा है, तो शरीर का जो है कैसी स्थिति है, शरीर का पोस्चर कैसा है, पोस्चर जो है वो चैन से हैं कि बेचैन हो रहे हैं कि कोई तनाव है, तो वो एक बहुत सपोर्टिंग एंकर की तरह काम करता है। क्योंकि जो मन है वो निराकार होने के कारण उसको देख पाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। शरीर आकार है, उसका एक फॉर्म है, तो उससे एक टेंजिबल चीज़ है जिसको कि हम जिस एंकर बनाया जा सकता है। तो बंते जी ने फिर कहा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरा यही तरीका है कि शरीर के ऊपर ध्यान दें और देखें क्या शरीर झुक रहा है, स्लम्प हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा मन भटक रहा है, और फिर उसको सजग होके पोस्चर को ठीक कर लें और फिर दोबारा बैलेंस ले आएँ। बेसिकली हमारा चित्त जो है वो सुंदर है, ब्राइट है, या डल हो रहा है, ढीला पड़ रहा है, उसको धीरे धीरे धीमा हो रहा है, तो उससे शरीर से उसका बड़ा भारी रिलेशनशिप रहता है। तो जब भी चित्त के अंदर कुछ स्लॉथ या टॉर्पर या झुकाव, चित्त जो है हल्का पड़ने लगे, सजगता उसकी कम होने लगे, धीमी पड़ने लगे, तो शरीर के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो उससे दोबारा से उसको एकाग्र करने का काम कर सकते हैं, दोबारा से सांस की ओर ध्यान देने का काम शुरू कर सकते हैं। Okay, we'll have a bit of a break.